Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, just let me go on different platforms and see who's live with me. And in the meantime, those of you who are watching me, you can always let me know where you're logging from. Are you from Pakistan, are you from abroad, or are you from any other province or district of Pakistan? So just let me know जब तक आप लोग ये चीज़ देखते हैं. I'll just go on different platforms and see who's live over there, and then we can just start with the session. And in the meantime, do let me know what do you think about this topic. Do you find it interesting, or what are your thoughts? So what do you think I intend to discuss in this particular topic? So you can just let me know about your comments, whatever they are, and I'll just go and see if I can see myself live on different platforms. Okay, so yes, I can see myself live, and here I'm just going to mute myself. Right. So आज मंडे होने की वजह से what I can see is people are late. So okay, so that's your time management skills. Well, it's okay. You know, there is. I'm not going to force you that you have to be here at 8 p.m. and this is the time. But the thing is that I'm punctual and I'll go as per my timings. And like there are many who are watching and they're not going to tell me they're watching, but still I know they're watching. So I'll just begin with my session. And you know what, today's session, सबसे पहले तो let me ask you, how was your weekend? Did you enjoy your weekend? Did you do something productive over the weekend, or did you just sleep and while away time till the weekend was over? And then obviously when it's Monday, most of you are lazy and you don't want to get out of your beds and you still want to sleep. So do let me know आप लोगों का weekend कैसा गुजरा था. And I can see someone watching, so whoever you are, welcome to my live session. And I'm like today's topic, it's a very simple topic, but अक्सर औकात ये जो टॉपिक है ना, इसको बहुत जो है अंडर वैल्यू किया जाता है. And when you think about whatever you're doing in life and you think it's not much, and yes, there are people जो कि अंडर वैल्यू करते हैं, but let me assure you, आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, it's always making a difference and it's creating an impact. So अगर आप अपने आप को अंडरमाइन करते हैं या लोग आपको अंडर वैल्यू करते हैं, तो never be discouraged, never be demotivated कि what I am doing is less, cause you don't know, you are at least doing something, and that doing, if it's in the positive direction, it's making a difference, it's impacting lives in a positive way. So ये चीज़ें तो जो है बात की चीज़ है कि what kind of difference you are creating, whether it's positive, it's negative, but whatever you're doing, it's making a difference. So I would always love to talk about positive differences, and आज भी मैं जो हूँ positive difference की ही बात करूँगी. So and then there are small things, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, when you're doing those are the things that are creating a difference. So सबसे पहली चीज़ तो इसमें होती है कि what is important, the power of everyday action. That's important. Whatever you're doing every day, whether it's in chunks, whether it's in small steps, whether it's in the form of goals, it's making a difference. Like what, it can be as simple as recycling, and it can be as difficult as constructing something. Like it all depends कि भाई आपका जो है like what are your resources या what are your capabilities, आप किस level पे क्या चीज़ कर रहे हैं. But at the end हर चीज़ जो भी आप कर रहे हैं, even if you're passing a smile at a stranger, that's also making a difference, cause it can be possible कि भी जो stranger है जिसको आप smile pass कर रहे हैं, that person might be going through a very difficult time, or maybe suffering from something, या maybe a lonely person, or maybe in a very devastating condition. So it can be anything. So आपका जो है just आपने क्या करना, आपने 3 मसल्स ही हिलाने ना, स्माइल करने हैं. वैसे बज़ाहिर स्माइल में 3 मसल्स यानी 3 मसल्स तो होते हैं, बट
it takes a lot of bones to collaborate together, and then you smile. So but smile is a powerful remedy. Kabhi try karke dekhe. Most of the time, you know what, when I'm traveling and I pass through traffic signals, I smile at not looking inside the cars, and I don't pass smile to them. But yes, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे बच्चे होते हैं जो कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर baba jis, and there are elderly women as well, and they're selling something. And when you pass that smile, it itself is a magic. And then the people come forward and they give you a lot of duas. So अगर आपको बैठे बैठाए जो है दुआस मिली हैं, without doing anything, you are just extending a gesture, a smile, that helps a lot, and that makes a difference. So छोटे छोटे actions होते हैं जो आप हर रोज कर रहे होते हैं. So in this scenario, smile is very powerful. Then if you're doing something else, like if you're recycling or reusing some water bottle, rather than आप जो plastic जो है purchase कर रहे हैं, जो कि mostly waters जो है plastic bottles में आती हैं. So if you're using something which is reusable, so then you are, as a result, you're saving the environment. So by doing this, you're also creating a positive impact, and it's making a difference as well. So this is number one thing, the power of everyday actions. And then what, another thing, that is intentionality of choices. आप जो भी choices बना रहे हैं, what is the intention behind those choices? Okay, thank you so much. I can see someone at the top of my screen. So whoever you are, welcome to my live session. And when I wind up this session, I can take you live on camera. Okay, so intentionality of choices matters a lot as well. Now we have to be mindful that whatever actions we are doing, they have to align with our values. क्योंकि अगर आप जो है कोई difference make करना चाहते हैं, तो you have to see कि जो भी आप कर रही हैं, is it as per say your values, or you are going totally against your values. क्योंकि if you are going to go against your values, that is कि you might be creating a negative impact, and you don't want to do that. So what अगर आपने difference make करना है, it's very necessary. Your actions has to align with your goals. They have to align with your values, and overall आपका जो impact होगा, that has to be positive. So like इसमें हम जो है किस तरीके से मैं आपको इसकी example दे सकती हूँ. Like someone who likes to educate. Okay, चलो और सबको छोड़ो. I'll take my own example. Like I like educating people, and the best way is the way I come on these platforms, and I try to impart different tips regarding professional insights or personal insights, या education में जो है how education affects us, or especially how is education affecting the youth. So whatever type of education you are imparting, you have to impart the education in a way that is digestible, that is comprehensible, and that is that is easy to adopt as per your own practical experiences. Like it's not that कि भाई मैंने जो practical experiences किए, you are going to face the same kind of practical experiences. Life is different for everyone. हर एक का जो canvas of life है वो different होता है. It's just that all of us, we play a role over here. वो शेक्सपियर के आपने अगर पढ़ा हो, the world's a stage and every one of us, we have to play our role. So exactly when you are educating or when you are imparting, you are playing your role. If I'm playing the role of a teacher and you're playing the role of a student, so you're a really good student. So that's why you come to my live sessions, and you facilitate me through interactive discussions, and pour in your comments as well, whatever those comments are. So thank you so much for being good students. So the thing is, this is the intentionality of choice which I have made. My intention is to educate, to impart, to share my knowledge, whatever that knowledge is, whether it's regarding essences of life, whether it's
regarding transformation of life, whether it's regarding motivation, whether it's regarding inspiration. So my purpose, this is my intention, this is this is a choice which I have made intentionally that I want to do this. So जो आपकी choices होती हैं, your intention has to be in alignment with your goals and whatever impact you want to create. Okay, Muhammad Yasin, thank you so much for the compliment. Okay, nice quoting. Okay, thanks so much. Nasirullah, thank you so much for joining and watching. Yes, I keep on remembering quotes because there are some quotes which are so powerful कि वो आपको कभी भी नहीं भूलते. And then there are certain other quotes कि you just keep on reading or going through them, you know, during your whole lifespan, yeah, even in your everyday life as well. So they are so frequent, you just remember them, you don't have to, you know, take them out and recall them again and again. Okay, so this is about intentionality of choices. अच्छा, then इसमें एक और जो चीज़ है, that is the ripple effect. Like आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ripple effect के बारे में सुना होगा. Okay, who's going to tell me what is ripple effect? Come on, I'm waiting. भाई हर वक्त मैंने ही तो नहीं बोलना ना, कुछ आप लोगों ने भी बोलना है. Yes, I can see you writing, but then मैं आपकी writing में ही जो है like you can talk or you can come live at the top of my screen, so I can invite you live on camera. Okay, so who's going to tell me about ripple effect? What do I mean by ripple effect of actions? So do you think actions have a ripple effect? Or what is it? What actions am I talking about, or what is the ripple effect? चलें जी, अगर जो है किसी को नहीं भी पता तो कोई नहीं भाई, मैंने कौन सा आपको डांटना है, या मैंने कौन सा जो है लेंस से जो है घुस के आप लोगों को you know कान खींचनी है. No, not me. I am not that kind of teacher. I'm a very, you know, digital literate friendly kind of teacher. So I don't believe in these you know, punishments. Not actually with these kind of punishments at all. So देखिए, जो चीज़ आप जितने प्यार से, जितने अच्छे तरीके से इम्पार्ट कर सकती हैं, उसका ज़्यादा असर होता है, rather than you become someone who's very strict, और या आप जो है डांट के सिखा रहे हो. तो डांट के तो भाई बच्चे भी नहीं पढ़ते, तो आप लोग तो फिर अक्सर बुजुर्ग हैं या मेरे एज ब्रैकेट के हैं, या हो सकता है मेरे से थोड़े से छोटे भी हों, बट देन अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अगर हम गपशप के तौर पे पढ़ेंगे चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट होंगी और एब्जॉर्ब होंगी. अच्छा, सो रिपल इफेक्ट, लेट मी कम बैक टू माय टॉपिक. व्हाट डू आई मीन बाय रिपल इफेक्ट? अब देखिए, लाइक जो रिपल इफेक्ट होता है ना, आई यू नो गिव यू द एग्जांपल ऑफ वाटर. जिस तरह पानी होता है ना, पानी में जब आप एक स्टोन फेंकते हैं, तो व्हाट हैपन्स इज कि स्टोन जैसे ही पानी को टच करता है तो एक रिपल बनता है, और फिर उससे जो है सर्कल वास्ट होता जाता है, एंड यू कैन सी दैट इट्स लाइक a lot of ripples are, you know, created in a circle. So in the same way, जो आपके actions होते हैं, या whatever differences you are making, whatever good deeds you are doing, तो उसका भी एक ripple effect होता है, और वो ripple effect जो होता है ना, it multiplies. It's not that कि only you are doing it, क्योंकि आप जो कर रहे होंगे उसको लोग देखेंगे, और लोग जब देखेंगे उसको कि and they, अगर उनको लग रहा हो कि something good is being added into their life, so they are going to adopt it. So जब वो एक adoption start हो जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा, उससे एक chain reaction बनना शुरू हो जाएगा. People are going to start doing those things, and then that's how, you know, communities are created, and that's how people collaborate when they know, okay भाई ये जो काम कर रही हैं, इनका काम हमारे values से align कर रहा है, हमारे goals से जो है meet कर रहा है. So in this way collaborations take place, and in this way businesses work, and in this way teams are made, चाहे जो है nationally हो चाहे internationally हो. So बज़ाहिर हमें जो है लगता है कि शायद बहुत ही कोई technical चीज़ें जो है इन चीज़ों में involve होती हैं teams बनने में, या you know, communities formulate होने में. No, it's nothing complex. It's simply that कि जब लोगों की values और लोगों के गोल्स एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं. समटाइम्स वो खुद जुड़ जाते हैं, समटाइम्स आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, एंड उन इंटरवेंशंस के लिए देन वी हैव सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु गिव दीज टेक्निकल सर्विसेज.
कि किस ऑर्गेनाइजेशन को किसके साथ जो है collaborate करवाना है, और बीच में you just become a facilitator and that's how you play your role. And guess what, सारे businesses में जो है ना यही मॉडल है जो कि काम करता है. It's just that कि नाम और लोग और जो बीच के फैसिलिटेटर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बट ओवरऑल जो बेस लाइन है ना वो एक ही रहती है. मकसूद इलाही खान, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम डीपली हम्बल्ड बाय एवरीवन्स कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लोग मुझे देते हैं. सो दिस इज़ रिगार्डिंग रिपल इफेक्ट. अच्छा, देन जो है देन अगेन इसमें एक और बात आ जाती है, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. और पॉजिटिव इम्पैक्ट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. आप जो कुछ कर रहे हैं it's by choice whether you want to make a positive impact या whether you want to create a negative impact. So जब आप अच्छे काम करेंगे तो उससे positive impact create होगा, और अगर आप कोई चीज़ गलत करते हैं तो उससे negative impact create होता है. पहले तो नेगेटिविटी जो है सारी फ्लो करती है ना, फिर उसके बाद जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. नाउ यू नो व्हाट, इसको मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक द अदर डे आई डिड दिस सेशन एंड आई सेड कि भाई don't come into my inbox and ask for my telephone number. Yes, business number I do share, but don't ask for my personal number or don't even ask for my address, home address. कि भाई we want to send you gifts. भाई why do you want to send me gifts? इतने लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं और किस किस को आप गिफ्ट्स देती हैं. भाई इतने बुरे इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं, घर का पूरा नहीं होता. वैसे दिस इज समथिंग जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, बट ये है कि वाई वुड यू want to go out of your means and want to buy someone some gift. So if you like my work, मेरी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन और लॉजिक ये है, if you like my work, there's an option on Facebook of stars. You can always give me stars. I don't even if you don't want to give me stars, at least you can write some content regarding appreciation, जिस तरह आप लोग मुझे comment box में लिख देते हैं. Even that's sufficient for me. Why do you have to go through all that hassle of going out of your way और gifts आप दें and वो जो है purchase करें and then send करें, उसके अलग से पैसे दें? Why? That's not ethical according to me. क्योंकि being in a professional setup and being a woman, it has a very different connotation. When you are giving a gift to a man or to a male gender, that's a totally different thing. उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको नहीं आकर कोई कहेगा कि हाँ भाई तुम्हें ये किसने गिफ्ट दिया है, क्यों गिफ्ट दिया है, कहाँ से गिफ्ट आया, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें गिफ्ट दिया. बट yes, if you're a woman and if you're a professional woman, then everyone's going to ask you that why did this gift come? Like there are so many other people on social media, how many of them get gifts? Why did you get this gift? And who is this person? And the connotation, it differs a lot and you become at a defensive. Though आपकी कोई गलती नहीं होती, you are just doing your role, you are on the social platform, you are there to educate people or to add some positive things in their lives. And then आप जो है यानी whatever is at the back of your mind, you are trying to allure the person through giving them gifts, and that's not good. So professionally be it's not good, ethically be it's not good, and you have to see this thing कि भाई the society we are living in, our society does not permit this. So you have to respect the professional boundaries and you have to respect the personal space as well. So अगर आप ये चीज़ें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? yes, एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये होगा, I'll simply block you or I'll report you or I can do anything because I have this freedom and I have this right of maintaining my peace of mind, my mental peace of mind, and I can do these things and I have this right. So मेहरबानी करके don't come into my inbox and tell me or ask me these things or these personal questions, cause I'm not answerable to you people when it comes to my personal life. Yes, professionally
if you want to question me, or if you have any questions regarding the sessions I do or the videos I share or the YouTube channel में जो भी वीडियो होती हैं, जो भी कंटेंट होता है, you can ask me those questions. I'll answer them professionally in my professional capacity. But when it comes to my my personal life, I'm not open to it. So अगर वो किसी को बात बुरी लगती है तो I don't care. ठीक है? Like, you know, there are so many people over here. आप इतने लोग हैं. Okay, Dr. Firdaus, thank you so much for joining and watching. So there are so many people over here who know me in my personal capacity. But I am a different person as when it comes to my professional capacity, and I'm a totally different person when it comes to my personal capacity. So आप में से भी बहुत से लोग होंगे who I know professionally, but मैं कभी आप लोगों को probe नहीं करती regarding your personal lives. So I do not like this कि you probe me regarding my personal life as well. क्योंकि I know कि there are many people on social platforms जिन्होंने ये सारे जो है boundaries इनको जो है तोड़ दिया है, and they're not respecting those boundaries, and they are, you know, bringing in their families into their, you know, social platforms, and there is so much else going on. So I don't want to get into those, you know, nitty-gritties, or I don't have to explain these things to you क्योंकि आप लोग बड़े हैं, mature हैं, educated हैं, and you know these things and you know the connotations as well. So I don't have to elaborate. So ये वाला जो है ना, this is exactly, it comes under the category of making a positive impact or a negative impact. So if I respect my values, I would respect your values as well. And if I want to create a positive impact, so this is my value and I'm going to respect it. And I'm not going to let anyone cross that boundary. So जब values की बात आती है या positive impact की बात आती है, this is again the intentionality of choices. कि आप जो भी decision make कर रहे हैं, it would either have a positive impact or it would either have a negative impact. So stopping someone at the boundary, that is not going to create a negative impact. But yes, if I let everyone to approach me in my personal capacity, या personally जो है they want to, you know, show their you know approval or appreciation by you know giving me gifts, so that's not acceptable. So then people have so many other logics कि भाई gift देना सुन्नत है और gift लेना भी सुन्नत है. But you know, I don't want to get into those nitty-gritties cause gift देना उसका जो है यानी एक अलग connotation है. But I'm talking about from the perspective of a woman कि you don't go and give every other woman a gift just because you like the person. So not going to get into those details क्योंकि ये जो है ना फिर इसमें ना थोड़ी तलखी create हो जाती है, and I don't want to, you know, create some kind of तलखी when I am trying to educate you people. But this is part of education. So rather than मैं आपको डांटूँ तो I have to, you know, आपको समझाना ज़रूरी है. Okay, then you know, at times you need to overcome complacency. और complacency किस तरह हो सकती है? Like sometimes, you know, we feel that our actions don't matter, and they are like they don't matter in the grand scheme या उनकी कोई value नहीं है. But then again मैं यही कहूँगी कि भाई everything matters. आप जो कुछ करते हैं, every small step which you are taking, it's mattering and it's creating an effect. आप अगर जो है किसी को लाइफ की कोई हकीकत बता रहे हैं, that is also creating an effect. My telling you different things and then there are certain things, जिस तरह मैंने personal boundaries की बात की, उसमें कहीं ना कहीं आपको feel हुआ होगा I was very stern. But yes, this sternness, it's good for the younger lot, cause जो अभी कच्चे ज़हन के हैं या जो amateurs हैं, जिनको जो है अभी अगर थोड़ा सा डांट दिया जाए तो उनको ये बात समझ आ जाएगी. But then if I take it very, you know, lightly and I don't say anything and I don't do anything, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को शेयर मिलेगी. इवन जो यूथ है, यूथ को भी शेयर मिलेगी कि भाई इनके लिए it's not a big deal. So you have to tell
पीपल कि भाई आपकी ये बाउंड्रीज हैं, जिस तरह हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं. सो व्हेन यू आर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, आपको ये चीज़ भी जहन में रखनी है फ्रॉम पेरेंटिंग परस्पेक्टिव एज वेल, कि when you are training your own children, so you are going to apply the same thing on other people's children because they are also children. So instead कि भाई आप जो है isolate कर दें कि भाई आपके अपने बच्चों के लिए और rules हैं और औरों के बच्चों के लिए और rules हैं, that does not happen, that cannot happen that way. Because when you are teaching or you are imparting something or any piece of education, you are treating everyone on equal footing. So it really there's an equality over there. चाहे आपके बच्चे हैं चाहे औरों के बच्चे हैं, you will have the same thing. You will be imparting the same education for everyone. So ये तो जो टीचर्स हैं ना इधर, वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते होंगे कि भाई स्कूल में जो है एक ही स्कूल में आपके बच्चे भी पढ़ते हैं और उसी स्कूल में आप भी टीच करते हैं. सो हाउ आर यू ट्रीटिंग दोज चिल्ड्रन? आर यू ट्रीटिंग देम as per your children, या are you treating them in a different way? Those schools का जो है scope और mindset, it's totally different. Cause what I have learned and I have observed in the school, उधर जो है ज़्यादा जो scenario है, it's that the teachers or the whole faculty, they need to treat the children as clients, not as students. तो जब ये वाला सिनेरियो आ जाता है तो देन यू कांट इवन इम्पार्ट व्हाट यू वांट टू इम्पार्ट, कॉज जो ट्रू वैल्यू है और जो ट्रू एजुकेशन है, इट लाइज इन दिस वेरी थिंग कि व्हाट आर यू इम्पार्टिंग. आर यू इम्पार्टिंग द सेम एजुकेशन या सेम वैल्यूज़ जो कि आप अपने घर में इनकलकेट करते हैं बच्चों में, एंड यू आर इनकलकेटिंग द सेम थिंग इनटू द स्टूडेंट्स ओवर देयर. But then again, if you're treating the students as clients, then you cannot inculcate those values. So, this is again a debate, और इसमें भी जो है बहुत सारे जो है pitfalls हैं which need to be addressed, which needs to be implemented by on the government level. But overall, what I have I was just reading about this post and this action taken by the government. And it's that the government officers and the educational sector, they cannot use the social media. And you know what, it's a very good step. Kyunki for the simple reason कि when you are in that role, you have to focus within the institution on that particular role. And when you are on social platform, you have another responsibility. क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं और आप जो इट कैन बी इन एनी कॉन्टेक्स्ट, बट देन यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर इम्पार्टिंग. सो एंड देन दैट डज नॉट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट. बट राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि एवरी वन इज ऑन सोशल प्लेटफॉर्म एंड एवरी वन इज people are delivering what's in their mind, or more they are focusing on the numbers. So social platforms, it's not about numbers, it's about being authentic, it's about making an impact. So my topic is about making a difference. So whatever you're doing, even if you're on social platform, you need to make a difference in the positive direction. अच्छा जी, देन जो है अगेन इसमें जो है ना एक जो लास्ट पॉइंट है ना वो ये है, अभी इतना लास्ट भी नहीं है, कि शाहिद हबीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. उसमें जो है यू नो व्हाट, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी इन योर एक्शंस. आप जो भी एक्शंस करते हैं ना उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी जो है ना हर चीज़ में नज़र आती है. चाहे आप जो है यू आर टेकिंग अ स्मॉल स्टेप, उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. टेक दिस एग्जाम्पल एज कि लाइक एवरी डे यू गो फॉर योर वर्क एंड से इफ़ यू आर अ प्रैक्टिशनिंग डॉक्टर, ठीक है, आप डॉक्टर हैं. सो एवरी डे आपके जो है ना सर्टन जो है काम होंगे जो कि आप करते होंगे. यू गो, यू हैव अ सिटिंग, यू सी दी पेशेंट्स एंड यू डील विद देयर प्रॉब्लम्स, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दिस एवरी डे. लाइक अगर आप जो है किसी दिन स्किप कर देते हैं तो उसमें
and it also depends कि आप कितने professional हैं, कितने you're attached to the profession. So if you have a love for the clients and the patients, and you take their problems as your own problems, then you do it consistently and with great passion. Now I know Dr. Firdaus, she is a wonderful doctor, and she's my kids doctor, and then she treats other kids as well. But yeah, she's a fabulous person, a down to earth doctor, and I have never seen a child doctor as she is. So I don't only know her on this professional level, but I know her as a person too. Cause I remember back in 2000 and I guess 10-11, when my husband, he was posted in Murray. So my children, they were very young, and like I couldn't travel every now and then from Murray to Islamabad, so to visit her, or if my kids were they were sick. So she was so nice, and she was so kind, and she was so facilitating, that one day I called her and I said, I need an appointment, my child isn't feeling better, so I need to come and show him to you. And she said that instead of you traveling here all the way from Murray to Islamabad, rather she took the diagnosis, she asked me like as good doctors do, and then she gave me the medicine over phone, and she didn't even charge for it. But now अब मैं क्या देखती हूँ, अब तो ये है कि आप अगर किसी डॉक्टर से जो है ना कहते भी हो कि भाई आपको जो है ये इशू आ रहा है, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि अच्छा जी, अगर आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है तो ये हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है, इसमें आप पैसे जमा करवा दें. सो वो जो माइंडसेट है और वो जो डिवोशन है, वो जो पैशन है, इट हैज़ चेंज ओवर टाइम, बट विद हर इट्स स्टिल द सेम. क्योंकि अभी भी, इवन दो आई एम based in Islamabad, but even now if I am in need, I can simply text her over the phone, and she is always there to help me, and she is always guiding me. और कभी जो है ये मुझे नहीं कहती हैं कि ओके भाई आप कंसल्टेशन फ़ी दें. मुझे खुद एहसास होता है कि भाई मैंने देना है, सो आई जस्ट मेक श्योर कि भाई आई गो एंड विजिट हर, एंड शी इज़ थॉरो a gem of a person. मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ वो कम है. So those of you जिनके बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, you can always visit her, and as per her profession she is a fabulous doctor, or as a person she is also gem of a person. And कोई भी आपके जो है ना बच्चों का कोई भी इशू है, you can always consult her. और अगर जो है आप जो है कहीं से नहीं भी आ सकते, या कोई भी आपकी मजबूरी है, तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि भाई किसी लोगों की मजबूरियाँ होती हैं. ओके खान जी, वालेकुम अस्सलाम. शाहिद हबीब, वालेकुम अस्सलाम. खान जी, ये जो आपने मुझे जो है ग्राफिक में जो है फूल भेजा है, शुक्रिया इसके लिए. ओके जी, फूल तो मैं जो डॉक्टर फिरदौस को भेजूँगी. ओके सो अच्छा, देन इसमें जो है लाइक कंसिस्टेंसी इन एक्शन, इट शुड, आपके जो एक्शंस हो, आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो एक्शंस में शो हो जाती है. जिस तरह मैंने आपको डॉक्टर फिरदौस का बताया, लाइक शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी कंटिन्यूसली वर्क्स फॉर मेकिंग लाइव्स बेटर, ख़ासतौर पे जो है बच्चों की और पेरेंट्स की और जो उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं. एंड यही कंसिस्टेंसी है जो कि आपको चाहिए होती है अपना काम परसू करने में. सो द मोर कमिटेड यू आर टू योर वर्क, द मोर लव यू हैव फॉर योर वर्क, द मोर यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. सो नेवर थिंक कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसका बहुत एक माइनर रोल है या उसका कोई रोल नहीं है. बिकॉज एट टाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, या दैट इज़ नॉट मेकिंग अ डिफरेंस, बट दैट इज़ कॉज आपको अपने एंड पे नहीं नज़र आ रहा होता वो डिफरेंस. बट येस, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, या जो लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, दे आर द वंस हु आर देयर टू टेल यू
कि आपका जो whatever you're doing it's making a difference. So don't be demotivated. हर एक का टाइम आता है, किसी का टाइम जल्दी आ जाता है, किसी का टाइम लेट आता है, बट जब तक वो टाइम नहीं आता you need to consistently work on it and keep on focusing on doing good. Mateen Chaudhary, thank you so much for joining and watching. अच्छा, सो देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ you have to choose the right difference, and whatever that is, कि what is it that you want to do, you have to think about it. So क्योंकि whatever you are thinking and making, that's the legacy you're leaving behind. Like, I think I'm going to leave this legacy of educational content to the generations who are going to come, and even to many babas and babis as well, जो जब इस एज ब्रैकेट में पहुंचेंगे, जब उनके बच्चे जवान हो जाएंगे या वो कहीं और चले जाएंगे, and then they become loners, so then they'll have something to watch over or do some kind of binge watching, educational binge watching कर सकते हैं, and they'll be able to find solitude in this kind of content. So this is going to be my legacy, at least this is what I perceive for the future years to come. So let's see. What I can do is I can keep on upgrading myself and upgrading my skills and making a positive difference in the lives of people. And as a result, in return, what you can do is you can show me your good emojis जो आप लोग show करते हैं on Facebook and on different platforms, and even on my YouTube channel. So those of you who still have not subscribed to my YouTube channel, do go and subscribe to my YouTube channel, और जो videos हैं वो देखें, उनको share करें, और जिन लोगों को उस content की ज़रूरत है उनके साथ share करें ताकि उनकी life में भी आसानियाँ पैदा हो सकें. So with that said, this is all what I wanted to share in today's session, and now the forum is open for your question. So if any one of you has any questions, you can let me know. खान जी, मैं उर्दू जितनी बोल सकती हूँ मैं बोलती हूँ, आप मुझे ये ना कहें उर्दू बोलें, आप मुझे कहें पश्तो बोलें, ठीक है, क्योंकि यू आर खान, उर्दू ज़्यादा बोलो, मैं कितनी उर्दू बोलूँ, मेरे से जितनी बोली जाती है मैं बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती. सो उर्दू बोल के तो देखिए मेरे जो है अल्फाज भी काफ़ी हद तक जो है ना सीधे हो गए हैं, बट स्टिल आई जस्ट यूज़ अ मिक्स ऑफ, जहाँ पर मैं उर्दू बोल सकती हूँ वहाँ उर्दू बोलती हूँ, जहाँ पर मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ मैं इंग्लिश बोलती हूँ, एंड दैट इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल. वो इतनी कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं होती. इससे ज़्यादा इंग्लिश तो आपको जो है स्कूल में जो है टीचर्स बोल के बताते हैं, या यूनिवर्सिटी में आपको जो है टीचर्स बोल के बताती हैं. 1.5-2 घंटे का लेक्चर अगर पूरा इंग्लिश में हो तो आपका खान जी क्या बनेगा. मैं तो फिर जो है 35-40 मिनट जो है उर्दू ज़्यादा और इंग्लिश कम बोलती हूँ. सो ओके, समथिंग गोइंग इन माई आईज. ओके, नाउ इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? आई कैन सी समवन. अच्छा जी, खान जी आप तो मेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हैं, मैं आपको लाइव तो ले लूँ, पर आप क्या बोलेंगे? आप उर्दू बोलेंगे? अगर आप उर्दू बोलेंगे तो मैं आपको लाइव लेती हूँ, पश्तो नहीं बोलनी, ठीक है? चलें. Okay, Khanji is adding. See, he declined. Khanji, it's very easy to criticize, but when it's time to face the public, it's very difficult. So try creating a positive impact. That's why I'm sitting here to create a positive impact. You play your role by creating a positive impact. अब इसको कोई पश्तो में translate कर दे, please. Okay, Mateen Chaudhary, would you like to come live on camera? Okay, so right now I don't have anyone who wants to come live. Fakhri Alam, welcome to the session. Yes, welcome to the session. And it's a long time. Fakhri Alam, आप किधर थे? बड़े अरसे बाद आप तो नमूदार हुए हैं. Okay, I can see someone
else. Let me just take this person live on camera. Okay, Hanji, your understanding, that's good. I'm proud of you. Your understanding. Okay, decline. Another one, you don't want to come live on camera. अच्छा जी, अगर कोई नहीं है who wants to come live on camera, let me know. ताकि I can wind up this session, and I'm going to come back again on Wednesday with another session with another topic, and we can discuss that topic. And in the meantime, अगर आप लोगों के कोई topics हैं and you want me to discuss those topics, you can always let me know, and you can leave your those topics in my comment box कि भाई आप इस topic पे बात करें, so I will talk on those topics. With that said, have a great day and see you on Wednesday. Bye bye and take care. Allah Hafiz.